Hello, dear children. Welcome back to the Knowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing Book 5. Children, this is your SST book and the name of the book is Time Travelers Unraveling Mysteries. So, today we are going to start with chapter number 15 of your book and the name of the chapter is The United Nations. So, let's start with the chapter. So here, with before starting the chapters, few flags are given here. You have to write the name of these flags, the name of the countries. Identify the flag of different countries shown in the picture and name them. So here, the first flag is of United Kingdom. Now, the next flag is of South Korea. Here, the next flag is of Canada. This flag is of United States of America. Now, this flag is of Japan. And this last flag is of India. So, these are the countries whose flags are given here. You have to write them. Now, let's start with the chapter. The first topic that we are going to learn is the United Nations, which means UN. The short form of United Nations is UN. Thousands of innocent men, women and children were killed in the First World War. So as you have learned about, there were many world wars. उसमें से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें बहुत सारे इनोसेंट मैन, वुमेन और बच्चों को मार दिया गया था. At the First World War, and which was between 1914 to 1918. So 1914 से 1918 के बीच में ये पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था. The League of Nations was formed to prevent further wars. So आगे वॉर ना हो इसलिए League of Nations means UN बनाया गया था. However, the League failed and the Second World War broke out in 1939. So कुछ समय बाद ये लीग फेल हो गया और 1939 में Second World War started. This war was most devastating than the previous one. So पहले जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उससे ज़्यादा खतरनाक, उससे ज़्यादा devastating ये वर्ल्ड वॉर था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड. It ended with the dropping of atomic bombs on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in 1945. So ये वर्ल्ड वॉर इसलिए इतना ज़्यादा खतरनाक था क्योंकि जब ये वर्ल्ड वॉर खत्म होने वाला था उसके पहले एटम बॉम्ब गिरा दिया गया था जापान के कुछ शहरों पे जिनका नाम था हिरोशिमा एंड नागासाकी. कौन सी ईयर में? 1945. These cities were completely ruined. ये जो सिटीज थे ये पूरी तरह से खत्म कर दिए गए एटम बॉम्ब की वजह से. After the Second World War, the countries of the world were determined to prevent another war. अब इस वॉर के बाद जो कंट्रीज थे, जो सारे देश थे, उन्होंने ये सोचा कि इन वॉर्स को खत्म करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, रोकने के लिए. Thus, the League of Nations were replaced by United Nations. So, League of Nations का नाम बदल के अब United Nations रख दिया गया. उसके जगह पे United Nations आ गया, जो इस बात पे ध्यान देता है कि वॉर वाली सिचुएशन कहीं भी क्रिएट ना हो. So here you can see the picture of UN headquarters in New York City, and you can see different flags are जो भी countries इसके पार्ट है उन सबके फ्लैग यहाँ पे लगे हुए. On 24th October 1945. So 24 October 1945 को the UN was formed with the purpose of achieving universal peace. So UN बनाया गया इसलिए ताकि सब तरफ पीस मीन्स शांति रह सके, हार्मनी एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, हार्मनी रह सके और
लोगों के बीच में, कंट्रीज के बीच में इंटरनेशनल कॉपरेशन रह सके. These goals are laid down in the Charter of the UN. So UN का जो चार्टर बना, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने, उसमें ये सारे रूल्स लिखे हुए हैं. It was 51. There were 51 original and founding members of UN. So UN में total 51 members रखे गए, including India, that signed the UN Charter. So इंडिया ने भी UN चार्टर को साइन किया. तो टोटल 51 members हैं वहाँ पे. The membership of UN is open to all peace-loving countries. So यहाँ UN की जो membership है वो सारी कंट्रीज के लिए ओपन है. कोई भी आके इसमें अपना हिस्सा ले सकता है या पार्टिसिपेट कर सकता है. सो वो कंट्रीज जिन्हें पीस मीन्स शांति पसंद है वो कंट्रीज इसमें ज्वाइन कर सकती हैं. द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूएन आर इन न्यूयॉर्क यूएसए. तो न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है. एंड इट्स 3 रीजनल हेडक्वार्टर्स आर इन जिनेवा, वीनिया एंड नैरोबी. सो इन 3 जगहों पे ये headquarters हैं इस UN. AI could open up tremendous opportunity for achieving the sustainable development goals set by the UN. So AI जो है help कर सकता है जो भी opportunities हैं उन्हें achieve करने में for the sustainable development of the countries. In the 2030 agenda for sustainable development. Now let's learn about the objectives of UN. UN के establish करने से क्या क्या objectives हैं? Let's learn about them. The main objective of the UN are as follows: to maintain peace and security among the nations of the world. So जितने भी nations हैं पूरी दुनिया में उन सब के बीच में peace और security को maintain करना. To develop friendly relation among the nations of the world. Friendly relation को maintain करना. To achieve international cooperation and solving international problems. So international cooperation को develop करना ताकि international problems को solve किया जाए. Of an economic, social, cultural और humanitarian character. So किसी भी तरह का economic मदद या फिर social मदद या फिर cultural मदद या फिर कोई भी humanitarian character means कोई human feelings वाले कुछ characters. And in promoting and encouraging respect for human rights. Human rights के लिए respect को encourage करना. And fundamental freedom to all. और सबको fundamental freedom मिलना means fundamental rights तो मिल रहे हैं पर fundamental freedoms भी मिल रहे हैं. To be a center of harmonizing the actions of nation. So जो भी nation है उनके जो भी actions हैं उन्हें harmonize करना. हार्मनी में शांति बनाए रखना, सुख शांति से रहना. इन द अटेनमेंट ऑफ दीज कॉमन एम्स. सो ये सारी चीजों को ऑब्टेन करना ही ऑब्जेक्टिव है यूनाइटेड नेशंस. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस. सो कुछ प्रिंसिपल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के. लेट्स रीड अबाउट देम. द यूएन एंड इट्स मेंबर इन परस्यूट ऑफ द अबव पर्पसेस आर सपोज्ड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस with the following principles. So what all principles the UN follows? Let's see it. All member nations should settle the disputes by peaceful negotiations. So जो भी members हैं UN के उन सबको अपने जो भी disputes हैं, जो भी लड़ाइयाँ हैं उन्हें बहुत ही peacefully शांत करना है, negotiate करना है. All members shall refrain from using force against any country. So जो भी members हैं UN के वो किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा ना करे, कोई भी तरीके का फोर्स किसी दूसरे कंट्री के अगेंस्ट ना यूज करें. आप कह सकते हो कि गोले बारूद का यूज ना करें या कोई ऐसी चीज का यूज ना करें जिससे दूसरी कंट्री को नुकसान पहुंच सकता है. ऑल मेंबर्स ऑफ द यूएन शुड एक्ट टुवर्ड्स द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. सो सारे मेंबर्स जो भी यूएन के जो भी मेंबर्स हैं उन्हें जो है मेंटेन करना है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी. मींस कि जो भी पीस या फिर शांति या फिर जो सिक्योरिटी है वो इंटरनेशनल रूप में मेंटेन होना चाहिए. ऑल मेंबर नेशंस मस्ट सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन ऑल द इट्स एक्टिविटीज. सो जो भी एक्टिविटीज हैं
ऑर्गेनाइज की जा रही हैं यूएन के द्वारा, उसमें सारे नेशंस को सपोर्ट करना है. So these are a few of the principles of United Nations. The UN achieves these goals through dialogue and consensus among all its members states of country. So UN ये जितने भी goals दिए गए हैं इन्हें जो है डायलॉग या फिर कॉन्सेंस के रूप में अपने मेंबर्स तक पहुंचाता है जो कि किसी स्टेट या फिर किसी कंट्री के हैं. करंटली देयर आर 193 मेंबर स्टेट्स इन ऑल. सो टोटल अभी जो है 193 मेंबर स्टेट्स हैं पूरे मिला. These members discuss various issues like war, nuclear weapons, global warming, development, economic poverty, trade, law, education, health, women and children. So ये जो भी nations हैं यहाँ पे वो सारे तरीकों के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, जैसे कि वॉर नहीं होनी चाहिए, वॉर को कैसे रोका जाए, न्यूक्लियर वेपन्स को कैसे बनाया जाए या कैसे यूज किया जाए या कितना कम यूज किया जाए, ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है उसे कैसे कम किया जाए, डेवलपमेंट कैसे किया जाए, इकोनॉमी को कैसे ऊपर उठाया जाए, पॉवर्टी मीन्स गरीबी को कैसे खत्म किया जाए, ट्रेड, लॉ या फिर एजुकेशन को कैसे इस पे ध्यान दिया जाए, हेल्थ पे कैसे ध्यान दिया जाए, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, वुमेन और चाइल्ड वेलफेयर की तरफ कैसे कदम बढ़ाए जाए, फूड सिक्योरिटी एंड मैनी अदर, फूड की सिक्योरिटी को कैसे बढ़ाया जाए. सो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो एक कंट्रीज आपस में मिलके इनके बारे में सोचती हैं और कुछ अच्छा निष्कर्ष निकालती हैं. नाउ द ऑर्गन्स ऑफ द यूएन. यूएन के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? द यूएन हैज इट्स ओन फ्लैग एंड एम्बलम. सो यूएन का खुद का अपना फ्लैग है और उसका खुद का एक एम्बलम है. द यूएन फंक्शंस थ्रू 6 ऑर्गन्स विच आर, यूएन जब फंक्शन करता है तो उसके 6 ऑर्गन्स हैं और क्या क्या है? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द सेक्रेटरीट. So let's learn about first one, the General Assembly. The General Assembly is the main deliberative organ of the UN. So ये General Assembly है, ये main organ है UN का. It is an assembly of the representatives of all the UN states. So ये जो है assembly है as a representative of जितने भी UN states हैं उन सबके. The General Assembly session is held annually from September to December. So General Assembly का जो भी session है वो सितंबर से दिसंबर तक का ही होता है. And it discusses and deliberates, ये जो sessions हैं ये डिस्कस करते हैं और डेलिबरेट करते हैं ऑन द वेरियस कॉन्सर्न्स फेसिंग द वर्ल्ड. वर्ल्ड में क्या क्या कॉन्सर्न्स हैं उनके बारे में ये डिस्कशन करते हैं. द डिस्कशंस आर फॉलोड बाय वोटिंग. ईच कंट्री हैज वन. सो सारी कंट्रीज एक इशू के ऊपर डिस्कस करती हैं और हर कंट्री को मौका मिलता है अपना वोट देने का. सो हर कंट्री का एक वोट होता है यहाँ. The Security Council. Now let's read about it. The Security Council is the principal organ of the UN. So UN का जो principal organ है वो है Security Council and it is responsible for the maintenance of international peace and security. So international peace और security को maintain करना ही इसका काम है. It has 15 members. So इसमें total 15 members हैं. 5 of these are permanent and 10 are non-permanent. So 5 मेंबर्स जो यहाँ पे वो परमानेंट हैं और बाकी के जो 10 हैं वो नॉन परमानेंट हैं. द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस एंड चाइना आर द परमानेंट मेंबर्स. सो यहाँ पे द सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके नेम हैं द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस, चाइना. So ये total 5 countries हैं जो permanent member हैं. They have veto, उनके पास veto अधिकार है, veto का अधिकार है. They have veto power and it means that even if only one of these members oppose a matter, the issue gets rejected. अगर इनमें से कोई भी
कंट्री किसी मैटर पे अपोज कर देती है तो वो जो इशू है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा. The 10 non-permanent members are nominated by the General Assembly for a 2-year term. So General Assembly जो है बाकी के जो 10 मेंबर हैं उन्हें अपॉइंट करती है कितने सालों के लिए? सिर्फ 2 साल के लिए. The Economic and Social Council. Now let's learn about this Economic and Social Council. A founding UN Charter body established in 1946. The Economic and Social Council is a place where the world's economic, social and environmental challenges are discussed. So ये वो जगह है जहाँ पे किसी भी देश के जो भी सोशल और इकोनॉमिकल challenges हैं उसके बारे में डिस्कशन होता है and debated and policy recommendations are issued. So इनमें डिबेट होता है और जो भी रिकमेंडेशंस हैं पॉलिसीज बनती हैं वो यहीं पे बनती हैं. The Economic and Social Council has 54 nominated members. So इसमें टोटल 54 nominated members हैं out of the 193 members of the General Assembly. So General Assembly में जो 193 members हैं उसमें से 54 यहाँ पे हैं. These members are nominated for a period of 3 years. ये जो members हैं इन्हें 3 साल के लिए नॉमिनेट किया जाता है. The Economic and Social Council holds its session each year in April and July. So हर साल अप्रैल से लेकर जुलाई तक के बीच में ये सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. It is the United Nations central platform for reflection, debate and innovation, thinking on sustainable development. So ये जो है UN का सेंट्रल प्लेटफॉर्म है फॉर रिफ्लेक्शन के लिए या डिबेट के लिए या फिर इनोवेशन के लिए जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द ट्रस्टीशिप काउंसिल. ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या है? लेट्स रीड इट. द ट्रस्टीशिप काउंसिल इज प्रेजेंटली सस्पेंडेड. अब जो है आज के टाइम में ये वर्कबल नहीं है, ये सस्पेंडेड है. It was established in 1945 to oversee certain territories of some member states. So कुछ member states जो हैं उनकी कुछ territories को देखने के लिए बनाया गया था. Its aim was to help these countries achieve independence and self-governance. So ये इसलिए बनाया गया था ताकि ये जो countries हैं वो independence को achieve कर सकें, ले सकें या फिर self-governance की तरफ workout कर सकें. By 1994, when this goal was achieved, the council was dissolved. So 1994 में जब ये जो है गोल जो है अचीव कर लिया गया तो फिर ये काउंसिल को खत्म कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया. उसके पहले ये वर्केबल था. Now the next is the International Court of Justice. The International Court of Justice or the World Court of is the principal judicial organ of the UN. So UN का एक जुडिशियल ऑर्गन है ये. The court is charged with settling. ये जो कोर्ट है this is charged with settling legal disputes. So legal disputes को यहाँ पे खत्म किया जा सकता है between states and giving advisory opinion to the UN and its agencies. So यहाँ पे advisory जो भी opinions हैं वो दिए जाते हैं UN को और जो भी disputes होते हैं states among the states that gets over here. It consists of a panel of 15 judges elected by the General Assembly. So General Assembly 15 judges की एक टीम तैयार करती है जो यहाँ आके बैठते हैं और अपना फैसला सुनाते हैं. General Assembly and Security Council ये दोनों मिलकर ये जजेस अपॉइंट करते हैं for a 9 years term. So now 9 years के लिए ये जजेस अपॉइंट किए जाते हैं. Its headquarters are in the Peace Palace at The Hague in the Netherlands. So नीदरलैंड के हाग में पीस पैलेस है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है. Now let's read about the Secretariat. The UN Secretariat consisting of staff representing all nationalities working in duty stations all over the world carries out the day-to-day work or as the organization. So Secretariat क्या करता है? इसमें जो स्टाफ हैं सारे नेशनैलिटीज़ के सारे जो नेशंस हैं उनके जो स्टाफ हैं वो अपनी ड्यूटी स्टेशन जो पे मिलते हैं वहाँ पे वर्क करते हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में और अपना रोज का जो भी काम है उसे बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं और कंप्लीट करते हैं.
It uses 6 languages of official work. So यहाँ पे 6 तरीके के languages यूज की जाती हैं official work के लिए. They are Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish. So ये जो 6 languages हैं वो यूज की जाती हैं. And it is led by Secretary General, who is the Chief Administrative Officer of the organization. So Secretary General जो होता है वो इसका देखभाल करता है और वो ही देखता है कि यहाँ पे सारा काम ठीक से हो रहा है या नहीं. Currently, Antonio Guterres of Spain is the UN Secretary General. अभी जो यहाँ के Secretary General है वो है Antonio Guterres of Spain. Now the next topic is specialized agencies of the UN. So UN के कुछ specialized agencies हैं. Let's read about them. These are different United Nations agencies which help in the UN bodies in fulfilling their basic objectives. So ये जो agencies हैं वो help करती हैं UN का किस चीज़ में, अपने जो भी objectives हैं उन्हें fulfill करने में. Some of these agencies are, कुछ agencies के नाम दिए गए हैं. United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization, which means UNESCO. So पहली agency है वो है UNESCO. UNESCO was set up in 1945 to encourage international cooperation in the field of education, science and culture. So education, science और culture के field में क्या करना है, encourage करना है cooperation among the countries. Its headquarter is in Paris, France. तो फ्रांस के पेरिस शहर में इसका headquarter है. United Nations International Children Emergency Fund means UNICEF. So UNICEF was set up in 1946. It works for the welfare of children throughout the world. So, पूरी दुनिया में जो भी बच्चे हैं उनके welfare के लिए बनाया गया है. And it is the headquarter. Its headquarter is in New York, United States of America. So इसका जो headquarter है New York में है. It helps in providing food, education and home for the children. So ऐसे बच्चे जिनके पास ये तीनों चीज़ें नहीं हैं उनकी हेल्प करता है, उन्हें फूड प्रोवाइड करता है, एजुकेशन प्रोवाइड करता है और रहने के लिए घर देता है. यूनिसेफ. Now the next organization is International Labour Organization, which means ILO. So the ILO was formed in 1919 and it helps in promoting opportunities for employment. So ILO का काम है बहुत सारे opportunity देना employment के लिए. And it also helps in solving the problems. So ये problem को solve करने में भी workable है. Between governments, employees and so government और employees के बीच में जो भी problem होती है उसको solve करने का काम करता है. ये children you can see the logo of UNESCO, then UNICEF and the ILO. So governments, employers and workers के बीच में जो भी disputes हैं उसको solve करता है. Its headquarter is in Geneva, Switzerland. So Geneva, Switzerland में इसका headquarter है. Now the next is Food and Agricultural Organization. So जिसका नाम है FAO in short. So the FAO was formed in 1945 and it helps nation improve agriculture. So nations की help करता है ये agriculture को improve करने के लिए. फॉरेस्ट्री एंड फिशरी प्रैक्टिसेस, फॉरेस्ट को डेवलप करने के लिए, फिशिंग या फिर फिशरी प्रैक्टिसेस को एनहांस करने के लिए, एंड इंश्योर गुड न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल. सो ताकि सबको अच्छा एक न्यूट्रिशन मिल सके, फूड की सिक्योरिटी के लिए ये बनाया गया था. इट्स हेडक्वार्टर इज इन रोम, इटली, और रोम के इटली में इसका हेडक्वार्टर है. Now the next is the World Health Organization, which is WHO. So here you can see the logo of FAO, which means Food and Agriculture Organization, and here the next logo is of WHO. So WHO क्यों बनाया गया था? It was formed in 1948 and it coordinates the efforts of various nations in fighting various diseases. So बहुत सारी बीमारियां हैं जिनसे फाइट करने के लिए WHO को बनाया गया. ये हेल्प करता है लोगों की in fighting these diseases and improving the general health of the people of the world. So वर्ल्ड में जो लोग हैं उनकी जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी ये बनाया गया. Its headquarters are in Geneva, Switzerland. So Geneva के स्विट्जरलैंड में इसका
headquarter है. Now the next thing is that we are going to learn is International Day adopted by the UN. So UN ने कुछ international days adopt किए हैं. Let's read about them. The United Nations observe some days as international days to mark special cause of issues of international interest and concern. Some days of international importance are. So UN ने कुछ important international days declare किए हैं जिन्हें celebrate किया जाता है. क्यों? उस तरीके की issue से लड़ने के लिए. So here the first day is International Women's Day, which is on 8th May. So 8th May को हमेशा International Women's Day मनाया जाता है. And the International Women's Day is celebrated in many countries around the world. So बहुत सारी countries हैं पूरी दुनिया में जहाँ पे ये मनाया जाता है. It is a day when women are recognized for their achievements without regard of without regard of division with the national, ethnic, linguistic, cultural, economic और political. So International Women's Day इसलिए मनाया जाता है ताकि जो भी वुमेन्स हैं उन्हें रिकॉग्नाइज किया जा सके, उनके जो अचीवमेंट्स हैं विदाउट द डिविजन, बिना उनके अंदर कोई भेदभाव किए, वेदर नेशनल, भले वो नेशनल हो या एथनिक हो, लिंग्विस्टिक हो या फिर कल्चरल हो, इकोनॉमिक हो या फिर पॉलिटिकल हो. सो हर तरह की वुमेन को एक तरीके से समझा जाए, इसलिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है. नाउ द नेक्स्ट इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे and it is celebrated on 5th of June. The World Environment Day aims to spread awareness among the importance of environment and its conservation. So environment और उसके conservation के बीच में जो है conservation के बारे में, development के बारे में ये day हमें बताता है. This day marked by the large scale afforestation camp. So इस दिन जो है बहुत सारे afforestation camps organize किए जाते हैं. Earth Hour and Go Green campaigns. So ये सारे कुछ campaigns किए जाते हैं so that the trees can be saved. Now the next day is International Day of Non-Violence and that is 2 October. So 2 October को International Day of Non-Violence celebrate किया जाता है. The International Day of Non-Violence is observed as on the birthday of Mahatma Gandhi as a mark of respect for his ideology of non-violence. So आपने देखा होगा कि जो मेन मोटो था महात्मा गांधी का वो था नॉन वायलेंस, मीन्स वायलेंस नहीं करना, मारपीट नहीं करना. सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है महात्मा गांधी के बर्थडे पे, क्योंकि उनका जो आइडिया था उसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं और उनका क्या आइडिया था? नॉन वायलेंस. On this day, message of non-violence are spread and are pledged to observe the principle of non-violence is taken. So ये मैसेज है सब जगह फैलाया जाता है और ये प्लेस लिया जाता है कि कोई भी वायलेंस नहीं करेगा. Now the next day is World Water Day and which is celebrated on 22nd March. So 22nd March को World Water Day celebrate किया जाता है and has a means of focusing attention on importance of fresh water. So ये डे जो है ये इस बात पे attention पे करता है कि fresh water is so much important for us and we should save it. And advocating for the sustainable management of fresh water resources. ये जो भी fresh water resources उन्हें save कैसे करना है, उन्हें properly use कैसे करना है, ये सारी चीजें के बारे में ये बताता है वर्ल्ड वाटर डे. Now 1st May is observed as Labor Day. 1st May को Labor Day observe किया जाता है, मनाया जाता है as a tribute to workers who work in factories and firms. So वो workers जो factories और firms में work कर रहे हैं उनके लिए ये World Labor Day celebrate किया जाता है on 1st of May, giving them tribute. Now let's quickly revise what we have done here in this chapter. The UN was formed on 24th October 1945 after the Second World War. The aim of the UN are framed in the Charter of the United Nations
The UN has 193 member states and the headquarters is New York City. The 6 organs of the UN are the General Assembly, Security Council, and Economic and Social Council, Trusteeship Council, International Court of Justice, and the Secretariat. UNESCO, UNICEF, and WHO are some important specialized bodies of the UN. The UN observes certain days as International Day to mark special causes. Now let's come to the question and answer, children. What is the importance of UN? So children, the main importance of UN is to develop cooperation and harmony between the countries. There is violence is not allowed here in this. It has different charters, and in which there should be. It was mainly developed to prevent war against different countries and maintain harmony among them. So list the main objectives of the UN. So children, here write down the important objectives after reading the chapter again. Now describe the functioning of General Assembly. So General Assembly के क्या functions हैं? That you have to read again and write here. Now what is the role of Security Council and how does it function? So Security Council के क्या functions हैं? It helps in the security. It helps in maintaining the peace and harmony between the countries, and it helps in the security between the countries, and also write down its functions. What is the role and work of ECOSOC? So write down the full form here and also write down the role and the work of this organization here. So children, I hope that you have understood the chapter very well, and for answering all the questions you have to read the chapter again and then answer the questions. So children, I will be meeting you soon with a new video. Till then, stay later.